अब सिर्फ हेल्थ ही बची है, एज तो निकल गई, जो बची हुई है उसमें हेल्थ खराब ना हो जाए इसलिए करते रहते हैं यार। अभी चला जाऊंगा मैं वॉक पे, इसके बाद आई विल गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। जी, so let's do some, continue to do the numericals we were doing. And okay, so we are on G, the chapter of, what chapter number is it? Sixth? नहीं, 7th है। Seventh. Okay. Good for us. So we have to do some more numerical practice on this so that we get more clarity on. Yes, system of particles, that is correct. So we were on an example of, yes, a rigid body. We have done torque. So we were on radius of gyration, we have covered. Uniforms 21 फिगर भी हमने कवर कर ली, to memorize, apply ourselves a bit. Moment of inertia कल हमने last question करा था rod का, which fell through like this, and we wanted to find out what is the velocity of the end B. Okay, next question. All right. जी ये लो, करो. So it's a disk and the mass is known, and it's rolling. So okay, rolling means it has a linear motion also, and you have to find out the total kinetic energy of the disk. ठीक है। Radius is R. But radius की terms में आंसर दिया नहीं, क्योंकि if you see the question, the answer में there is no mention of radius. So you have to find the answer in the given variables, velocity and the mass. You want to try? Yes sir। Okay. पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया Of a disk याद होना चाहिए, mr square by 2. So when it is rolling, this is the axis, right? Perpendicular, center के through जाता हुआ. mr² by 2। जी.
3D में है ये. Yes, mr square by 2. जीरो. That is correct. ये पेंकिंग थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई थी. Okay. ठीक है. दिस इज अब टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. Correct. Very right. That is true. हाफ इनटू आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है V is equal to omega r because it's pure rolling. Remember that. वी स्क्वायर By बाय r आर square. स्क्वायर. Right. Good. Good attempt. वन बाय फोर Yup. एम वी स्क्वायर G. प्लस वन बाय टू एम वी स्क्वायर. Yes. 3 by 4. थ्री बाय फोर एम. बढ़िया. Good one. Next. स्फीयर का रेडियस आर. Hmm. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा स्फीयर का? Solid sphere है? हाँ जी. 2 by 5 mr square. About the axis passing through the center of the sphere. 2/5 एम आर स्क्वायर. जी. रोटेशनल एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना. Hmm. ठीक है. Ratio of total is to rotational. दोनों ही ऐड करनी है. ठीक है. टू रेशो 7. ठीक है.
You got it. It's 5 kg. अगला क्वेश्चन। ये हो गया? अच्छा नहीं, ये लिख तो दिया। Wheel of mass. It is rolling. Wheel will be what? Disc, right? अच्छा, इसका आई दे ही रखा है। सब कुछ तो दे रखा है इसमें, और क्या ही करना। Same ही, right? हाँ, Quite similar actually, not तो exactly. सब कुछ दे ही रखा है, मतलब कुछ करना भी नहीं। जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल या ट्रांसलेशनल सॉरी। टोटल तो नहीं, टोटल नहीं, ये ट्रांसलेशन वाली पूछी है या फिर वो वाली? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशन, ठीक। सर करोगे ये वाला व्हील वाला? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक। रिपीटेटिव ही लग रहा है, कुछ नया नहीं है। So it's a cylinder which is rolling down. Just be careful that it's a cylinder. So when you apply the rules,
applied moment of inertia for a cylinder. Height is 4 meters, so the potential energy there is mgh. And you have to find rotational ke. Rolling hoti ja rahi hai. So it is going to be mgh is equal to half mv square plus half I omega square. But you have to find half I omega square. Moment of inertia of a cylinder Solid कितना होता है? cylinder. Solid cylinder कितना Yes. होता है? Half mr square. Half ms. यानी कि 0.01 0.0 जी. rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane. Right. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 मीटर पे कितनी रहेगी? सेम ही रहेगी अगर बॉडी यहाँ थी. So omega will increase. Velocity बढ़ती जाएगी ना नीचे. So what is the total final energy here? Rolling है. Rotational plus translation भी तो ही है. So whatever energy you have, what is this one? This This is is a moment of inertia. अच्छा, mi. Okay, this is mi of cylinder. ठीक है. Rotational kinetic energy plus translational kinetic energy is equal to mgh. Oh, Half I omega square plus half mv square is equal to mgh. ठीक है. So find omega square with the help of this expression. V is equal to omega r. निकल जाएगा. Square by No. Convert V into omega because your aim is to find rotational kinetic energy, not linear. v square by r square ही तो होता है ओमेगा स्क्वायर. हाँ. वही तो. Put it here ना. V is equal to omega r. अच्छा.
चलो वो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v निकल जाएगा उससे। फिर ओमेगा निकालना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू ओमेगा फाइंड व्हाट, रोटेशनल। रोटेशनल की ही ना। हाँ तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना, तो ओमेगा निकले तो बेटर है। वन 126 rad per second। 126 या 26? नहीं 126 आ रहा पर निकालनी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। है, उसका स्क्वायर व्हाट करना। इज द आर के ई? ठीक है, हाफ इंटू 0.0 इंटू 1। 79.38। ओके, आंसर इज 26.13। 6.13। Yes. I think your uh,
total energy which has come is half I omega square, and you have put V is equal to omega R. So omega is equal to V by, this is half mv square. हाँ जी What is this? Half I omega square. हाँ जी V by R. Radius कितना है? 0.1. Okay, so you have done half I. Where is I in this? आई काट दिया ना 0.01 आया था तो रेडियस से कट गया था So you have written half mv square plus half I omega square, half m. You have written it v square plus half I v by r, right? So this becomes half m v square plus half I v square by r square. And this was how much? This was 0.0 mr square by 2. mr square by 2 पर मैंने इसको mr square by 2 v square by r square v square by r square. तो ये r square कट गया. So this is half mv square plus 3 by 4, sorry, नहीं, 1 by 4 mv square is equal to 3 by 4 mv square. 3 by 4 mv square आना चाहिए था. And if the mass is 2 kgs, mass is how much? 2, right? 0.01 नहीं आज 2 mass 2 is 2 kg 2 2 2 2 2 है. तो अगर मैं यहाँ पे भी डालूँ तो I get 3 by 4 into 2 and the velocity is how much? पता नहीं, तो निकालनी है. चलो, is equal to mgh, right? So this becomes how much? 3/4 of, ये 2 कहाँ से आ गया? ये मैं वो तो m को डाला ना अच्छा ठीक है, 2 कट जाएंगे m तो कट गया. So 3 3 by 4 नहीं एक v मिनट square v square would be under root 4gh. 4gh by Yes. 3 Right. मतलब v equals to Yes. तो ये हो जाएगा under root 4 into 10 Hmm. into 4 Hmm. upon 3 Right. 160 upon 3 Hmm. 160 is 4 root 10 upon root 3. So 4 into root 10 is 3 point how much? Root 5 into root 2. under 2.23 into 1.41. This is 1.73. So 2.22 into 1.41. 222. 7.3 8. Achha, this is 7 point? 3 What? the v under root of 160 upon 3 Okay, is 7.3. and v Okay, meter per second. हाँ जी So this is our velocity, then your rotational kinetic energy is half I omega square. v by r यानी कि 7.3 upon 0.1 Right. is 73 Yep. half into एक मिनट इसमें हाफ mr स्क्वायर होता है ना सिलेंडर का mr square by 2. mr स्क्वायर by 2 into
mv square by 4 Hmm. uh, 2. 2 into 7.3 into 7.3 Hmm. upon 4 Hmm. 7.3 का स्क्वायर कितना होता है 73 into 73. 53.29 divided to 26.645 Yes, correct. This is correct. Joules. Okay, going to the next page now. Okay. Read the question very carefully. So in one case, it doesn't rotate, it just slides. So it is a normal case. And in the second case, it rolls with the same speed, but it doesn't. So it's rolling. Part B is rolling, part 1 is sliding. So sliding वाले case के अंदर please don't use half I omega square. It's half mv square. It's a straight linear motion in the part A, and the part B is the rolling motion. So when you're rolling with the same speed, but no slipping is happening. Part A is pure slipping, translational motion, no rotation is there. So compare for a thin cylinder, what happens to the kinetic energy when the same cylinder slides versus when it rolls. It's a hollow, thin cylinder. Just be very careful. So you have to go back to your list of 21 formulas and recall in your mind कि hollow cylinder का moment of inertia क्या लेना है, पहला step. एक बार वो लिस्ट पेज पे तो सर फॉर्मूला हाँ जी, लिस्ट फॉर्मूले हाँ, it's there. ऐसे लोड़ा में Hmm. Complete chart is given. That is what I refer to myself. NCRT also has the chart. All the books have a chart. Whatever book you pick, whatever notes you pick, you will get it. कौन से पेज में I think somewhere around 7.32 something. See, 7.3. Yellow colored chart is there. T3 है Okay. moment of inertia, radius of gyration and rotational kinetic energy. जी. So I think you will refer to, it's a cylinder, not a disc. So cylinder का आएगा. Thin ring, circular disc, rod, rectangular lamina, solid sphere, hollow.
hollow cylinder का answer is also half mr square by 2. mr square by 2 है. नहीं, इसका तो फिर रोलिंग वैसे होगी ना. इट इज रोलिंग विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू द टू सरफेस एरियाज जो सर्कल्स हैं इसके. दैट इज द वे इट विल रोल. सो इसका आंसर इज mr square. I is equal to mr square because it is going to roll like this. ये ऐसे थोड़ी ना होगा. The rolling will not happen like this. I think the incline. हाँ ठीक है. It will roll on the surface, right? So it is on the surface. This is the axis. When it rolls, ठीक। आगे की तरफ जब जाएगा ऐसे. हॉलो है ना सिलेंडर. हाँ सॉरी, ये मैंने सॉलिड सिलेंडर का बता दिया. हॉलो का mr स्क्वायर बाई 2 ही है. ये पहले ठीक है. फर्स्ट इज इट स्लाइड्स. हम्म, So it is not rotating, it is just moving on the ground with sliding motion. No rotation is observed. So it तो behaves like a point mass. Half तो mv तो square. ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। Yes. So I'll just rub all of this. बोथ एंड्स। अच्छा, तो ये टोटल मास है ना 5 kg का। Hmm. A is equal to half. अच्छा. Okay, 62.5. इसमें तो 62.5। तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं यूज नहीं हो रहा है इसमें, मतलब न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर तो ऐसा, मतलब सेंटर ऑफ एक्सेस मास। मान के चल रहे हैं ना. द एक्सेस अच्छा, बीइंग कंसिडर्ड इज थ्रू दैट ओनली. इट्स ओन मतलब फ्यूचर एक्सेस. में यूज होएगा ये। हाँ, अगर देते हैं वो कि एक्सिस इज पासिंग at 2 meters away from center of mass, तो फिर parallel axis theorem. ठीक है। Joules. जी। Yes. आप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सम हॉलो mr square by 2. About its own axis. अच्छा, It is independent of length. You can see there is no expression of height or length. अरे सर आप टेस्ट कर रहे हो। I is equal to half mr square. So it's a thin hollow cylinder.
47 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। रेशियो नहीं अच्छा कम, वो क्या कहते हैं, बी पार्ट, नहीं, बट व्हाट इज द क्वेश्चन? रेशो। कंपेयर। पिछले कितनी आई थी? 62.5। 1.3 टाइम्स। 1.3 टाइम्स सेकेंड में कितनी आई है? 3 4। 47। दिस इज वियर्ड राइट? ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ और बट इसका 125 आए, 3/4 है ना। विच इज मोर देन हाफ, 0.75। 3/4 हाँ, मोर शुड देन हाफ और लेस देन हाफ। हाई। 0.75 होता है 3/4 और वो 0.5 होता है, तो ये कम कैसे हो गया? 3/4 of 125 should have been greater than 62.5. एक मिनट, It's kind of weird that it has come out to be 125 अगर कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 4 है ना, 93.75। this also is not clear. What is kinetic energy is equal to? You have put 1/4 here, mr square by 2 को हम लोग पूरा नीचे कर लिया। हाफ आई ओमेगा, तो 1/2 का इसको दे दिया m r square कट गया, so this is 1/4 v is equal to omega r, 1/4 आ गया। लिखा तो ठीक है 1/4। 1.5 टाइम्स एनर्जी इन स्लाइडिंग। लेट्स चेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। टेबल में क्या दिखा था? टेबल में ना इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर ना, देखो हॉलो सिलेंडर अबाउट इट एक्सिस का mr स्क्वायर है। हाँ गलत ले लिया, एम आर स्क्वायर है। एक एम आर स्क्वायर, नॉट एम आर स्क्वायर बाय 2। डबल हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स, 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 टाइम्स 62.5। है ना, यस 125। जी, तो 1:2। 1:2, 2:1। यस, 10⁻24 है।
पावर आई नहीं रही। Anyway, 10 raised to power 24 mass. सर आपने आपने क्या सर टेट्रेशन का नाम सुना है आपने? साइंटिस्ट है? नहीं, साइंटिस्ट नहीं, एक चीज होती है। क्या चीज? जैसे हम एक्सपोनेंट में इधर लिखते हैं ना नंबर को, हम्म। टेट्रेशन में हम इधर लिखते हैं। क्यों? ये ऐसी नोटेशन है। इसका मतलब है 10 रेस्ट पावर 10 रेस्ट पावर 10। ओ, ये ई का मतलब क्या है? which E? ये वाला। अच्छा, so the radius is 6, 6400 किलोमीटर होता है ना, 6400 किलोमीटर या 6 है ये। पावर है ई रेस टू पावर 6 होना चाहिए था, 10 रेस टू पावर 6। और ये 10 रेस्ट पावर 24 केजी यस अर्थ का मास। जी। इतना ज्यादा होता है अर्थ का मास? हम्म। मैं कम सोच रहा था। नो नो, क्वाइट अ लॉट। अर्थ का रेडियस ऑफ क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एक स्फीयर होता है ना अर्थ में। यस, 2/5 mr square, solid sphere. बट वैसे अर्थ की शेप स्फीयर तो नहीं होती, जियोड होती है। For ये calculations, it is taken perfect sphere. टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। जी। You have to find the work done. Where does it say total kinetic energy? तो You have to do negative work to slow it down so that the day becomes 30 hours instead of 34 hours. You have to do amount of some work. How much work will you give to the half I omega square? क्योंकि अर्थ का ट्रांसलेटरी मोशन तो कोई है ही नहीं. So you have to give it already has a half I omega square, on top of which you will give some negative work, and the new work will become half I nu omega. So that will slow it down. You have to give it negative work. So Earth का moment of inertia mr square है. Strange. Should I mr square by 5? नहीं. वैसे सर अर्थ वैसे स्फीयर भी हाँ, तो 2/5 mr square. Yes, it should be moment of inertia का exact अगर हमें लिखना है तो we should write 2/5 here. 2/5. So which means it is rotating and then you are giving negative work to it to slow it down. तो इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को कम करना है हमने by giving some negative work. So current energy plus the negative work equal to new energy. So half I omega 2 square. Omega 2 के अंदर you will is 2 pi by 24 hours.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल नहीं सकते. द ओनली थिंग यू कैन डू इज to slow it down is to do negative work on it, because if you do positive work it will further start spinning faster. तो आपको इसको स्लो डाउन करना है. आपकी फाइनल एनर्जी 30 आवर्स पे डिपेंडेंट है. टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड इज 30. Any doubt? No. Initial rotational energy ठीक है. is half I omega 1 square, and you do some negative work, तो वो work done plus negative ही होगा obviously, is equal to the new kinetic energy. So half I omega 2 square. Okay. And this I is equal to 2 by 5 mr square. Okay, this omega 1 is 2 pi by 24 into 60 into 60, and omega 2 is equal to 2 pi upon 30 into 60 into 60. So you can calculate the work done by subtracting these two. You will get the work done. सही है? हाँ जी. Like, this is like more like a friction acting on the Work done by the friction in a space. correct. Some kind of dissipation is going to happen. So I'm giving extra emphasis to this chapter and I'm not rushing it through, because I know कि most of the class will fail. Okay. Question for you. बताइए. Please discuss. Please explain. No. Some sphere has smaller moment of inertia than a hollow cylinder. Same mass and radius about an axis. जी. बड़ा मुश्किल क्वेश्चन. थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चार्ट को रेफर करना पड़ेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा. दोनों के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे. 2 by 5 mr square है.
This is your sphere. Okay, and its mass is m and the radius is r. And then what you do, you melt this and create a cylinder which is hollow. Okay, and so this is your hollow cylinder, which means अब जो mass है सारा का सारा वो एक्सेस से दूर नहीं हो गया. पहले तो ये सॉलिड था ना, so a lot of mass was also close to the axis. हाँ जी. अब ये मास सारा का सारा पेरिफेरी में आ गया यहाँ पे दीवार पे. तो आर अगर सेम है और ये मास दूर हो गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? mr²/2 फॉर अ हॉलो सिलेंडर. mr² था या mr²/2 था फॉर अ हॉलो सिलेंडर? mr²/2. हाँ, तो ये और It's इसका था about symmetry axis. हाँ 2/5. तो ये देखो, ये दिस इज 0.4 ओनली ना. इफ m is same and radius is same, this is 2/5. और इसका देखो कितना है. सेम मास को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पेरिफेरी पे, तो डिस्टेंस मास का बढ़ गया ना. जी. सॉलिड के अंदर तो मास लेयर में होता है ना, तो मास बाय मास अगर हम चलेंगे तो दिस मास इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स. एक स्फीयर यहाँ पे है छोटा सा, ये वाला. उसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? बहुत कम नहीं है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो गया इस वाले मास का. फिर एक इसके बाहर एक और मेक अ हॉलो शेल, and then make another hollow shell, and then make another hollow shell. So many shells. डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सिलेंडर में तो डिस्टेंस ऑलरेडी सबसे ज्यादा है, आर पे ये सारा मास. यहाँ पे जो मास है सॉलिड के केस के अंदर, वो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? क्या समझ आ गया? हाँ जी. It's the way the mass is distributed in a cylinder is farther from the axis of rotation as compared to a solid sphere, where the distribution of mass is organized in a way that if we divide the sphere into shells, hollow shells, each shell will have some distance, and that distance will always be less than any distance r in the case of सिलेंडर. ये छोटे छोटे आर ही होंगे, जबकि वो छोटा सा मास जो शेल का है, ये मान लो अंदर का शेल है, उसका मास है 1/10 ऑफ द टोटल मास. लेकिन जो यहाँ पे 1/10 मास है सिलेंडर के ऊपर, वो तो ऑलरेडी आर डिस्टेंस पे है, तो उसका आ जाएगा m/10 r², जबकि इसका होगा m/10 इंटू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस का स्क्वायर, वेरी क्लोज टू द, बिकॉज ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन. Okay. 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 A uniform square plate and a uniform rectangular plate have identical areas and mass, which is good. That'll help you compare.
ठीक है, so per unit mass is identical. You have to find the moment of inertia of this rectangular plate and square plate first about xs xr sorry. So इसका निकालना है xr में और उसका निकालना है xs में. इसका कंपेयर करना है फिर दोनों को. करो स्क्वायर प्लेट और उसका moment of inertia of a square plate. You can use integration if you want to. I think square lamina का कोई ऐसे अपने आप में तो we have not done anything, right? Of a square plate कोई ऐसा कोई formula तो था नहीं. Of a square plate for a square plate if you have to do. Okay. Wow. Understood. So how do you plan to take integration for this? So even if you take a square plate like this, okay, so this is your square plate, for example. What you do is the axis is somewhere here, right? This is your axis. So what you do is you consider split this into a small rod. The width of the rod is dx. Okay, so the rod छोटा सा rod दिखा दिया इसके अंदर, and this is dx and the distance is x. So if you consider the moment of inertia of this rod about this axis, this is the axis, उसका एक about अपना axis होगा और parallel axis की वजह से at a distance. तो moment of inertia of a rod about an axis which is passing through the rod, not perpendicular to it, but passing through the rod का situation. What was that? ml square by 12 था. एक था ना एक. There was a formula which was there for, yeah, 1 by 12 था शायद. ये, yes, 1/12 ml square. Right, so इसका हो गया ml, इसका dx है अगर width, और इसकी जो area of the square कितना दिया हुआ है ऊपर, इट इज c. इसकी बात कर लेते हैं c की. तो इसका ये c है, दिस इज c, क्योंकि स्क्वायर है पूरा का पूरा, सब कुछ c है. दिस इज ऑल्सो c. ओके, तो जो रॉड है ये वाली जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. सो इसका मास निकालना है हमने. तो हमें मालूम है इसका टोटल मास अगर m है और इसका एरिया c स्क्वायर है, तो इसकी मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज m बाय c स्क्वायर इज द मास डेंसिटी पर मीटर स्क्वायर. और ये जो है तो इसका अपना मास कितना हो जाएगा बेसिकली, m बाय c स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू सी, क्योंकि इसका अपना एरिया है c इंटू डी एक्स रॉड का. तो रॉड का जो छोटा सा मास है वो है मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रॉड. तो अब हमें मालूम है कि रॉड के केस में हमें लगाना है डी एम मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू डी एम तो हमने निकाल लिया, m बाय c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इंटू सी. m बाय c स्क्वायर
m by c square is and this is a total mass into L square by 12. So this is my di for the small rod. और मेरे केस के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरा ये x जो है it varies from 0 to c और -c to c, अगर मैं बोलना चाहूँ तो उस साइड और इस साइड दोनों तरफ रॉड ही रॉड है. So basically I'm saying you can divide the square lamina into multiple rods. So one of the small rods I have taken, उसका moment of inertia ये है, और एम एल स्क्वायर, हाँ, प्लस ये तो हो गया रॉड का, प्लस इसके अंदर वी विल हैव टू ऐड दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम आल्सो, क्योंकि ये रॉड जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस पे निकालना है. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है वो हो गया रॉड का जो मास है डी एम मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, और जो ऊपर निकाला है ये भी लेना पड़ेगा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द रॉड. रॉड के थ्रू भी जो एक्सिस था ये वाला, उसका तो हमने निकाल लिया एम एल स्क्वायर बाय 12, लेकिन वो रॉड एक्चुअल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है तो वो भी ऐड कर दिया हमने ये वाला. सो एम बाई सी स्क्वायर डी एक्स इंटू सी इंटू एल स्क्वायर बाय 12, और यहाँ पे फिर से वी विल हैव टू पुट डी एम विच इज एम बाय सी स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m by c square into dx into c into l square by 12. So m by c square और c बाहर चला गया और अंदर इधर आ गया x square dx और यहाँ पे आ गया dx l square by 12. This is the rod's total moment of inertia about the axis we are referring to. अपने वो ml square by 12 काफ़ी नहीं था. Now let's integrate this. So this will become integral m by c x cube by 3 plus L square by 12 x, and it is minus c to c. So this is m by c cube by 3 minus c cube by 3 plus L square by 12 c minus c is equal to m by c 2c cube by 3 plus L square by 12 into 2c. So this becomes c सब में से cancel हो गया, m 2 by 3 c square plus L square by 12 into 2, तो ये into 6 हो गया. This is your moment of inertia of the rod about the central axis or about of the square lamina. हमने अभी निकाला है ऑफ द स्क्वायर लैमिना ये वाला. अब हमें यही काम करना पड़ेगा इसके लिए, रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए. नाउ डू इट फॉर रेक्टेंगुलर लैमिना, सी इफ यू कैन कंपेयर द टू. बट एक बहुत अच्छी बात दी हुई है विच आई लाइक्ड, दैट सी स्क्वायर इज गिवन टू बी ए एंड टू बी. तो जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ये सी स्क्वायर हमारे काम आएगा कंपैरिजन के, क्योंकि ये सी स्क्वायर ए बाई बी होगा. ये तो हमने स्क्वायर लैमिना का निकाल लिया, अब हमें रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालना है विच आई थिंक विल बी, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है और इसके अंदर भी रॉड लेनी है और इंटीग्रल इज फ्रॉम माइनस बी बाई टू टू बी बाई टू, और इसमें भी एक्सिस जो है वो एक्स आर ले, अच्छा इसमें एक्स आर नाम रखा हुआ, ठीक है एक्स आर ले लिया, ये वाले एक्सिस पे लेना है. लेंदी वन, ट्रिकी या लेंदी, निकालना जरा, कैलकुलेट फॉर दिस. ठीक, रॉड का एक बार रूल देख लें. रॉड का जो है एम एल स्क्वायर बाय 12 अराउंड विच एक्सिस इज इट? इज इट थ्रू द रॉड पैरेलल टू द रॉड और इज इट परपेंडिकुलर टू द रॉड? मैंने तो उसको पैरेलल टू द रॉड ले लिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, moment of inertia of a rod is what we need to focus on. Rod, thin uniform rod, इसका आता है ml square by 12 around an axis perpendicular. ओए hello, ml square by 12 is around perpendicular, but if the axis is through the ml square by, यार
पहली बात तो मेरे को लगता है इसमें जस्ट अ करेक्शन इन माई माइंड सेट, इफ द अगर यही रॉड है, ये वाली रॉड है, तो इसका अपने अराउंड एक्सिस, अपने एक्सिस पे तो जीरो होगा, क्योंकि द ऑल द मासेस लाई ऑन द एक्सिस। सो ये वाला पार्ट तो इसका जीरो हो गया, but it has no moment of inertia because it has no perpendicular distance from the axis. The masses are lying on the axis. This dm is on the axis. तो ये वाला पार्ट तो जीरो है ना। जो मैंने ml²/12 लिया वो तो इस एक्सिस पे था, सॉरी। अगर ठीक है। आप एक रॉड हो और ये आपका एक्सिस है, तो सारे मासेस का कुछ डिस्टेंस है ना इधर से, इसका 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 इनका एक्सिस है, बट हम तो ये वाला एक्सिस ले रहे हैं। तो रॉड का अपने एक्सिस के थ्रू निकलने से तो इट विल बी जीरो। तो ये ओके। वाला पार्ट तो वैसे जीरो था, ये तो लेना ही नहीं था हमको, हमने तो गलती से वो ले लिया, वो वाला पार्ट जो जीरो है, क्योंकि वो खुद ही एक्सिस के थ्रू जाता है। तो ये जो बाय 12 वाला पार्ट था, सॉरी, कंट्रोल जेड में मैं वापस जाता हूँ एंड लेट जस्ट पुट इट बैक कि हमने सही, हाँ, ये पार्ट तो हमारा काट देते हैं हम इसको। आई थिंक ये देर इज नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेयर, only the moment of inertia which exists is this, because this rod if you fix it here and this is your axis, ये rod तो फिर भी यूं घूम सकती है ना। एक डंडी लगा दी आपने, एक डंडी घूम रही है, बट अपने एक्सिस के अराउंड तो खुद ही, अपने एक्सिस पे तो पूरा मास है, तो देर इज नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस शुड, वी शुड नॉट हैव कैलकुलेटेड दिस पार्ट। आई थिंक ये एक पार्ट वेस्टेज था, कंप्लीट वेस्टेज। तो x³/3 वाला जो पार्ट है, दैट इज द ओनली पार्ट वी शुड हैव बीन वरीड अबाउट। तो ये भी काट देता हूं मैं। तो एक्चुअली जो हमारा आंसर आया दैट इज m/c 2/3। तो 2/3 mc² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर रॉड। ये आंसर होना चाहिए था हमारा ऑन XR, इस एक्सिस पे, XR पे। अब नाउ डू द सेम थिंग फॉर अ rectangular plate. So on a rectangular plate, if you do the same thing and you split the rectangular plate in a rod-like structure, and again you say कि the axis being considered is this axis, right? ये axis है। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा, तो मैंने बोला एक्सिस यहाँ पे है रॉड का, बट ये रॉड के ऊपर ही एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं। तो रॉड का इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है। वट एवर एग्जिस्ट इज दिस, ऐसे रोटेट करेगी ये रॉड, पूरी की पूरी रॉड उठ के ऐसे आ जाएगी यूं, है ना। तो इसका आप ले लो, ये बी है, ये भी dx ले लो, और दिस, इसका मास डेंसिटी आ जाएगा मास अपॉन a इंटू बी, क्योंकि इसका एरिया इज a इंटू बी, दिस इज b, दैट इज a, सो दैट इज अ मास डेंसिटी ऑफ दिस, सिग्मा ले लिया आपने, और ये dx है आपका, और ये आपका x है डिस्टेंस। same integration, di is equal to dm into x²। now dm will be m by ab multiply by, this is the mass per unit area. The area of this rod is, if I take this, the a into dx, a into dx, a is the length of the rod, dx is its width, multiply by x², that is di. So I is equal to m by b integral x dx. So m by b x² by 2, and the variation is from minus b by 2 to b by 2. So m by b² by 8 plus b² by 8 is equal to mb by 4. I think some सही करा हमने कैलकुलेशन। सॉरी, दिस शुड बी x² का इंटीग्रल x³ होता है, b³, दिस शुड बी mb² by 4। a नहीं आया कहीं पे सडनली। द डेंसिटी इज मास अपॉन एरिया, एरिया इज दिस, di is dm into, so mass density multiply with the length, कट गया ये a। so इसका आ रहा है mb² by 4, उसका कितना रहा था, mc
ये आ रहा था 2/3 mc square. So 2/3 mc square versus mb square. So you need to compare mb square by 4 versus 2/3 mc square, given that a into b is equal to c square. The areas are equal, the masses are equal. So even if I cut this, ये कट जाएगा मेरा, और a into b is equal to c square. तो इधर आ रहा है b square by 4 और इधर आ रहा है 2/3 of c square. यार काश यहाँ पे a भी आ जाता तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता. वही मैं देख रहा हूँ कि डेरिवेशन में गलती है क्या. ए बी आ जाता तो कंपेयर कर लेते ना, ये कट जाता फिर ए बी सी स्क्वायर के साथ, ये ए बी होता तो कंपेयर हो जाता 1/4 और 2/3. सिग्मा इज इक्वल टू एम ए बाय बी, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, एम अपॉन ए इंटू बी इंटू ए डी एक्स, लेंथ इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर. ये कट गया यार इससे. So that component is gone. How do you compare b square by 4 and 2/3 c square given the areas are equal? Let me put c square equal to a into b. So b square by 4 and 2/3 b into a. b भी चला गया तो this is b by 4 and this is ये b कट गया. So this is 2/3 of a. अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इज लेस देन 1. ए और बी में कोई रिलेशनशिप नहीं पता यार. अगर ये पता चल जाता ना ए और बी हाउ आर दे लिंक्ड, आई कुड हैव डिवाइडेड एंड सेड हु इज ग्रेटर. हाउ डू यू नो दैट 1/4 ऑफ बी is greater than 2/3 of A? Can't say anything. वैसे अगर फिगर में देखें तो it is true, right? B is very small as compared to A. तो B का अगर 1/4 कर दोगे B का, और इसका स्क्वायर लैमिना का if you see, तो स्क्वायर लैमिना का जो है 2/3 of A will be larger. कह नहीं सकते unless you have the facts with you. But have you understood the problem? Yes, sir. Rod लेके कैसे dx करा? I think there is some, here we have done some error because A is the length and area is A into dx. ये सही लिया हमने, into x square, and that also is correct for moment of inertia. So I is equal to integral of m by b. काश a रह जाता यार, कहीं से a आ जाए एक, and it cancels with it. So I can't compare b and a because there is no information about b and a. Information about areas was given. ये a into b आता ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाता. di is equal to, ये रॉड है, रॉड का डिस्टेंस मैंने लिया, इंटीग्रेट भी मैंने -b2. एक मिनट, कैन आई सी what is it? It is xr and xx. तो मैं बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ. This is my xr and this is my xs. तो लिया तो ठीक है यार, xs भी, xs भी सही ले लिया. सिग्मा इज इक्वल टू मास, di is equal to dm into x square, mass density multiplied by the area of the rod into its distance. So ये dm into x square लिया, m इंटू ए में a कट गया, m बाय b बार आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया x क्यूब बाय, ओके, सो दिस शुड हैव बीन व्हाट, x क्यूब बाय, ठीक ही लिया. जब आप x स्क्वायर बाय x स्क्वायर dx का इंटीग्रल लेते हो तो वो x क्यूब बाय 3 आता है ना, x क्यूब बाय 3, हाँ x क्यूब बाय 3 आता है. तो वो क्या बन गया, b बाय 2 होल क्यूब बाय 3. सॉरी, एक 3 भी मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ b बाय 2 आ गया तो b क्यूब बन गया, नीचे 3 था, सो 3 इंटू 8. सो दिस एक्चुअली बिकम्स 24 प्लस 24 m b स्क्वायर अपॉन 1 बाय m b स्क्वायर बाय 12 एक्चुअली.
mb स्क्वायर बाय 12 था ये. सो अगर मैं कंपेयर भी करूँ 12 है ये, दिस इज 12, तो मेरा एक वो भी कट गया अगर 3 4s are okay, 4, so this is also gone. b square by 4 and this is b square by 4 and b भी कट गया. I don't know yaar, what's wrong. We will have to redo this. ठीक है. Something wrong, but doesn't quite not clicking. Approach seems to be right. So we will do it again. दोबारा try करेंगे. ठीक है? Okay. So we have done. Now the next topic we have to start is the topic of relationship between torque and moment of inertia. Okay. Okay, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्कूल के पेपर में और बहुत